each and every individual has a brand by default, whether they like it or not, whether they want it or not. बेसिकली इमेज मैनेजमेंट होता क्या है? हमारी पर्सनल ब्रांड को बिल्डअप करने में इमेज मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? So image can make or break a deal. Takes 50 to 60 meetings to break this first impression. So sustaining personal brand is about being consistent. अभी के समय पे ना हर अगला आदमी स्किल्स के बारे में बात करता है. कई लोग आपसे ये कहते हैं कि ये वाली स्किल सीख लो, कई लोग आपसे ये कहते हैं कि वो वाली स्किल सीख लो. पर क्या आपको पता है कि स्किल्स भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं? पहला होता है हार्ड स्किल, दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल. हार्ड स्किल बेसिकली वो सारे स्किल्स होते हैं ना जिसपे हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं. बट सॉफ्ट स्किल कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं ना जो हमेशा इग्नोर्ड रह जाता है. हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में इसमें इतना एफर्ट नहीं डाला जाता है. पर जैसे समय के साथ हमें ये पता चलता जा रहा है ना कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए फिजिकल हेल्थ होती है उतनी ज़रूरी मेंटल हेल्थ भी होती है. उसी तरह से हमें वक्त के साथ ये भी पता करना पड़ेगा कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए हार्ड स्किल्स है उतनी ज़रूरी हमारे सॉफ्ट स्किल्स है. सॉफ्ट स्किल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के स्किल्स. तो इन्हीं सारे स्किल्स को ना हम लोग बेसिकली इमेज मैनेजमेंट के अंदर सीखते हैं. अब इमेज मैनेजमेंट क्या होता है? आई नो कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे और इसी सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए हमने आज के अपने पॉडकास्ट में होस्ट किया है रोशनी मैम को, जो कि इमेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है और इन्होंने मल्टीपल लोगों को हेल्प किया है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो भी सॉफ्ट स्किल्स की मदद से. तो इंट्रो में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा. अगर आपको इसके बारे में अच्छे से सीखना है तो आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा. और पॉडकास्ट को देखना स्टार्ट करने से पहले इसे अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे आप अपने लाइफ में ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो. सो बिना टाइम को वेस्ट किए वेलकम रोशनी मैम ऑल द वे टू अनप्लग्ड. एंजॉय योरसेल्फ. Hey Roshni ma'am, how are you doing? All good, Himanshu. How about you? I'm also doing absolutely fine. First of all, thanks for taking out your precious time and being on the podcast. It really means a lot to me. It is an honor for me, and I would really love to share some of my insights with you. And definitely, when it's a podcast, it will be with the society as a whole. So, I mean, I'm eager to do this. So, ma'am, सबसे पहले आप हमारी एक बार ऑडियंस के लिए अपनी इंट्रो दे दीजिए. Yeah. So I am ROSHNI BHATTACHARYA. I am the founder of the Mind Beyond. So what I do is I train and coach individuals as well as corporates and educational institutes in different soft skills, which starts from communication to conflict management to team building to how empathy is important in the workplace and all the other allied areas. So this is all about my work. Although I have a firm, the Mind Beyond, I do not have people assisting me in this firm. But of course, in future, I have such a vision that I will grow the firm in a way where I can put on my vision and mission or share it with people and put it in the society for the betterment of the society or for the understanding of the importance of soft skill in workplace or even in personal lives. तो एज ए टोल्ड कि आपके एक स्टार्टअप भी है जो कि है द माइंड बियॉन्ड, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकती हैं हमारे ऑडियंस के लिए? Okay, the Mind Beyond, the name Mind Beyond, yes. This question I was asked by so many people. The thing is, we have to understand, like whatever we do, whatever we say, in whichever way we behave, it all is a byproduct of our thoughts, which seeds in our mind. Hence, how we can control our minds, our thoughts, and how we can control our actions and behavior at the same time is all about the Mind Beyond. So, how we can improve our behavior and our skills through our thought process is all about the Mind Beyond. Okay, that's great. So, जैसे कि लाइफ में हम लोग कुछ भी करते हैं तो हर चीज़ों के कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ थंब रूल होते हैं. तो एक पर्सनल ब्रांड के क्या क्या पिलर्स होते हैं, आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? Okay, yes. So personal brand, let me tell you first, there are some myths about branding. So people think branding is all about a big institution or a big corporation or maybe a big business, but not about a person, an individual. But that's very wrong. Each and every individual has a brand by default, whether they like it or not, whether they want it or not. That's not the question. Now, since we all have a brand, like, for example, this is how Himanshu walks.
This is how Himanshu talks. So that creates your brand. That is you. You are identified with these characteristics, right? Yeah. So we are being branded by default. Now, the essential part of it is to be careful about how we do the things and how we are perceived by others. So the strong pillars, the most basic pillar, I would say, the foundation, is definitely communication, which involves a plethora of things. When I talk about communication, it's not only about talking or about body language. It is also about our behavior. It is also about our etiquette. It is also about our attire. It's a combination of so many things together. Yeah. So that's a great way of telling. So ये चीज़ को मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि डजेंट मैटर हम लोग किस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है या नहीं. अगर हम लोग खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्डअप नहीं करेंगे ना, तो लोगों का जैसे मन करेगा वो हमें वैसे परसीव कर लेंगे. Absolutely, absolutely. वैसे ही वो परसीव करेंगे, क्योंकि आप उनको वो मौका ही नहीं दे रहे हो कि आप क्या हो वो सच में वो ठीक तरीके से परसीव करे. जी. आप वो नहीं दिखा रहे हो वो जो आप दिखाना चाहते हो. आप वो दिखा रहे हो जो वो देखना चाहते हैं. That's straight the point. So, जैसा कि आप एक इमेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हो, तो आप बता सकते हैं, लाइक मैं भी इस टर्म से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं था इस पॉडकास्ट के पहले, तो फिर बेसिकली इमेज मैनेजमेंट होता क्या है एंड हमारे पर्सनल ब्रांड को बिल्डअप करने में इमेज मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? ओके, इमेज मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चीज़ है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. व्हाट इज इमेज? आप एक बार सोचो, जस्ट थिंक इन योर माइंड about a person whom you like or whom you do not like. What do you see about the person? There's an image that you form, right? Yeah. Understood? Now, image management is again about the same thing, about how we talk, what we talk, our voice, our attire, our presentation of our own selves, not presentation of the softer parts or anything related to our work. It's about presenting ourselves. You will understand, like whenever somebody talks, if there is too much of shrill, गले में बहुत ज़्यादा वो shrill नहीं होती है, बहुत पतली आवाज़ होती है, बहुत देर तक आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपके कान में लगेंगे. या ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम चिल्लाते हैं, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा धीरे बोलो भाई. So all these small little parts form a part of our image. So image can make or break a deal. Suppose आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कोई बिजनेस डील के लिए ही जा रहे हो, या फिर लड़की देखने जा रहे हो, है ना? पहली बात जो होती है, या तो हम उन्हें पसंद करते हैं या वो हमें पसंद करते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते हैं. ऐसा क्यों होता है? कभी हमने बहुत गहराई से सोचा है? इमेज एक ऐसी चीज है which is more about first impression, which forms with the blink of an eye. ये तोड़ने के लिए कुछ नहीं तो 50 से 60 मीटिंग्स ज़रूरी होती है. हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें 50 से 60 मीटिंग्स की चांसेस मिलेंगे. जी. है ना? Of course. जैसे इंटरव्यू हो गया, या कोई बिजनेस डील हो गया, या जैसे मैंने कहा लड़की देखने ही चले गए आप, आपको तो 50 से 60 मौके नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मौका मिलेगा, और उसी एक मौके में ही आपको साबित करना है. राइट. First, the person has to be interested in your appearance, in you, to listen to you, how you are. अभी मुझे बहुत लोगों ने बोला, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे, अब्दुल कलाम, जी. वो उनके पास तो उतना कुछ कपड़ा भी नहीं था, उनका हेयर स्टाइल भी किसी तरीके से थे. मैंने बोला बहुत कम लोग उस स्टेचर में पहुंचते हैं, और हम उनको कब से जानने लगे हैं, जब उन्होंने अपने आप को एक जगह पे एस्टैब्लिश कर लिया है.
जी, of course. तब उनके लिए वही उनका ब्रांड था. उनका अपीयरेंस जैसा भी हो, कोई उसे देखने वाला नहीं है, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड हो चुका था कि वो कितने बड़े ज्ञानी हैं. पहले आप वो एस्टैब्लिश करो, फिर इतने सालों से, या फिर इजियर वे में जाओ जहाँ पे लोग आपको आपके अपीयरेंस देख के ट्रस्ट करें. They think, okay, yes, I like this person. I want to talk to this person. I want to really know more about the person. ये चीज होनी चाहिए. एंड आई थिंक इस केस में ना लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं. जैसे आपने बताया कि अगर अब्दुल कलाम जी तो कभी अपने अपीयरेंस के बारे में ध्यान नहीं देते थे, तो लाइक इस केस में तो हम लोग ये नहीं ना कह सकते कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो अगर एक समय में चाय बेचते थे, तो हर कोई चाय बेचने वाला अगर पीएम बन जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है हिमांशु. नरेंद्र मोदी जी, उनका अटायर देखिए, वो हमेशा चेंज होता रहता है विद टाइम. क्यों? क्यों? उनको उस अटायर की जरूरत है. क्यों? इसीलिए क्योंकि हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकते. उनको प्रूफ करने के लिए, उनके ऊपर वो ट्रस्ट डेवलपमेंट बनाने के लिए, डेवलप करवाने के लिए, उनको वो अपीयरेंस या वो प्रेजेंटेशन ज़रूरी है उनके लिए, सो दैट जनता उनको देख के, जनता के मन में आए कि ओके, वो पीएम है, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं, वो इस चीज़ के काबिल है कि वो हमारे देश को लीड करे, या वो हमारे देश को जब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, देख के लगता है कि यस, दिस शुड बी लाइक ए प्राइम मिनिस्टर. हमें अच्छा लगता है दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में उन्हें देख के, उनका प्रेजेंटेशन या उनका अपीयरेंस. तो आप, तो जैसा कि हम इमेज मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो आप अगर मैं आपसे लाइक पॉइंट वाइज पूछूँ, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जो इमेज मैनेजमेंट के अंदर आती है, लाइक अपने पहला तो कम्युनिकेशन स्किल कह दिया, एंड ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. इट्स एन अम्ब्रेला बेसिकली. There are so many things under this one umbrella called communication. So image management is starting from your head to your toe. The shoes you wear, your haircut, the spectacles you're wearing, the cut of your beard, the attire that you're wearing. Are you giving enough importance to the color combination of whatever you're wearing, or whether that color is suiting you or not? Whether the frame and the spectacle that you're wearing is suiting you or not, or is there any other frame that will enhance your look or your personal presentation, even if it is about the haircut, even if it is about our personal hygiene, like our nails, whether it's cut properly, whether, if I talk about women or girls, if we have nail paints, whether the paints are put properly or is it worn out? होता है ना कि निकल आता है आधा आधा पहन के. So I'll tell you, the other day I was in a bank. There was a lady who was very nice, but initially her appearance made me think, क्या वो सच में ये काम कर पाएगी? Because of her appearance and her presentation. But since it was important for me that I get the job done, मैं बैठी रही, और क्योंकि उन्होंने किया वो काम, then I was convinced that yes, she can do it. But जैसे मैंने कहा, हमेशा ये नहीं होगा. और maybe, और एक चीज़ है, it is not about others also, it is also about ourselves. आप खुद देखिएगा, जब आप ड्रेसअप होके कहीं पे जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है. जब आप ऐसे ही शादी निकलते हो, you do not feel good about it. Right? This is why you go to a meeting in a proper attire. You won't go for a meeting in your shorts or in your t-shirts, right? Of course. You might go to a nearby shop to just get something or grab something, but you will not go for a proper meeting in that attire. Why?
Just try sitting for a meeting in that attire. Look what happens, how the other person reacts and how you feel. So it's like we need to feel respected, trusted, and confident. All these things comes from the way we appear. Okay. And I also personally think that the color which we are wearing now also boost our confidence. Like in my case, I just love the black color. So whenever I used to wear that color now, like I don't know how, but my confidence level like automatically it goes up. Yes, of course. Because there are certain colors which suits the skin tone. Yeah. Certain color suits more in Indian skin tone. Certain color suits more in the Western skin tone. Yeah. So definitely you will look better in those colors and you will look good. You will feel confident and hence definitely colors also. And that has a direct relationship with boosting our moods as well. That's a great point. तो आई थिंक अगर पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे तो उन्हें समझ में आ ही गया होगा कि इमेज मैनेजमेंट का, हमारे एटिकेट्स का, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में एज वेल एज हमारे प्रोफेशनल करियर्स में भी. तो जैसा कि ना इस चीज़ के बारे में हर कोई बात करता है कि पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्डअप करे, पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्डअप करना है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. बट आई थिंक जितना पर्सनल ब्रांड को बिल्डअप करना ज़रूरी होता है ना, उतना ज़्यादा ये भी ज़रूरी होता है कि हम उस ऑलरेडी बिल्डअप पर्सनल ब्रांड को ना सस्टेन कर पाए, मेंटेन कर पाए. या तो लोग पर्सनल ब्रांड तो बिल्डअप कर लेते हैं बट उसे सस्टेन नहीं कर पाते. तो आप इस चीज़ के लिए कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे जो कि जिससे लोग अपने पर्सनल ब्रांड को सस्टेन कर पाए? So yeah, generally what happens, once we think that we have already built our brand or we have already built our image, we become careless about the entire thing that we have been discussing till now. It's also about consistency. So sustaining personal brand is about being consistent of making certain things a habit or a discipline. This is how you can sustain. Suppose, of course, suppose you have a beard, right? And now you have properly trimmed your beard, but after 1 month, it grows and you do not care about trimming your beard. How do you look? Are you maintaining your brand? No. I mean, are you maintaining your image? No. Hence, your brand is also getting affected. You need to be careful each day and every day about these little things. मैम, तो आप इससे रिलेटेड कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकती है कि मतलब कि एक पर्सन जिन्होंने कुछ ऐसे इमेज मैनेजमेंट टेक्निक्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए एंड उससे उन्हें बहुत ज़्यादा एक अच्छी सक्सेस हासिल हुई अपने लाइफ में, उन्हें अच्छी ग्रोथ मिली अच्छे लेवल पर? Oh, there are so many such cases, not one. Because this image management is a subject which needs to be studied, and we have studied it from an organization called ICBI. Then, lot of people. So one myth about image management is that image management is generally done by women. No. Even men can do image management, because when we are talking about image, it is not only about women, it is also about men. What are the prints we are wearing? What are the cuts we are wearing? If it is about our clothes. And all other details. If we talk about communication. So it is not only about a woman, it is also about a man. Hence, there in that institute, after a lot of us have come to know the impact of image management, definitely we ourselves, personally, I have seen growth. Also, I have my coaches or mentees who have come to me to develop their personality or image. So whenever anybody comes for personality development, I always put stress on image management, because this is how you can feel confident and be confident. After all, personality development is all about confidence building. Once you know that you are capable of doing something and you can do that,
you will be able to identify what you want, or your goals, or your vision. Yes, of course, there are certain steps for that, which I guide. But before that, it's important that you have that much of confidence in yourself. Yes, I can do it. So a lot of my coaches and mentees who are having trouble in their job life, definitely it was in their early career, they have got better results in their workplaces. There are students who I have coached in management institutions. They have got very good placements. And of course, as I said about us, we have seen growth in our own careers. So definitely image management speaks a lot. I'll tell you another important story, which is actually about a negative aspect, not the negative aspect of image management, but if we are not careful about our image, what can happen? So it's a bit funny story. Yeah. My maternal uncle had come down from the USA after about 55 to 60 years. Oh my God. Yes. So he was pretty aged. He was beyond 80. And he lost his wife. So definitely we, all the relatives, urged him to come down to India so that all others can take care of him. Now, one day he fell down and he injured his head. It was a severe head injury. He had to be rushed to the hospital. He was kept in an emergency room in the hospital. We all were looking for the doctor when a gentleman came up and started cleaning the wound. My mom said, "Wait, why are you doing it? Call the doctor." The person looked at my mom and said, "Don't I look like a doctor?" We were shocked because we thought he was the cleaner of that emergency ward. So it is also about earning respect. If you're careful about your image, your brand, you earn respect. So तो मुझसे आपसे बात करके मुझे भी ऐसा लग रहा है, लाइक सपोज अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं एंड वी हैवंट टॉक्ड विद एनीवन, तो जहाँ पर जब हमने कुछ कहा नहीं है ना, तो लोग सामने वाला वही परसीव करेगा जो वो हमें देख के परसीव कर सकता है, just because we haven't talked with each other. Absolutely. That's the first impression. Yeah, that's the first impression and it's also the last impression. Absolutely. Why it is said this way? Because, as I told you, it takes 50 to 60 meetings to break this first impression. Hence, it's said that way, like, yeah, first impression is the last impression. Because you always do not get this chance of meeting a person 50 to 60 times. Yeah, not Not in case when you're going for some business deal or for interview or any such circumstance. Yeah. So that's a great point. So आपको क्या लगता है, सपोज एक और जैसे एक टॉपिक होती है जो मेंटल हेल्थ की होती है, तो पहले लोग इस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं थे, बट अब धीरे धीरे लोग कोविड के बाद से, लाइक मैंने काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को मैंने अपने पॉडकास्ट में होस्ट किया है, तो उससे मुझे पता चला कि कोविड के बाद से ना मेंटल हेल्थ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जोर देना स्टार्ट कर चुके हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में और जानना चाहते हैं, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं जी। तो इसी टाइप से जैसे कि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ में इतना हाइप आया है, हाइप इन द सेंस पॉजिटिव सेंस में हाइप आया है। Correct. People have become aware. Yes, it's aware. Yes, it's hype would be a negative word in that. So आपको क्या लगता है ये इमेज मैनेजमेंट के लिए लोग क्या काफ़ी समय से अवेयर है, फिर इसके लिए भी अवेयरनेस रिसेंटली आई है? मेरे ख्याल से अभी भी अवेयरनेस बहुत बाकी है। बहुत बाकी। पहले से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हद तक हुआ है, बट अभी भी बहुत बाकी है उसका अवेयरनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इमेज मैनेजमेंट के। जैसे इमेज मैनेजमेंट इज मेंट फॉर द सेलिब्रिटीज ओनली, which is not. Image management is meant even for a homemaker. एक बच्चा, according to psychologists, which has been researched, एक बच्चा भी अपनी माँ की तभी सुनेगा जब उसकी माँ वैसे दिखेगी। जैसे तैसे घर में रहने से वो बच्चा भी अपने माँ को इग्नोर करता है। Okay. Even a homemaker gets weightage from the family people, talk about the child or the husband or anybody, in-laws or anybody. It's only if the homemaker presents herself properly. ये भी आया है कि जब criminals appear होते हैं कोर्ट में,
जजेस लेसर पनिशमेंट देते हैं जो कि प्रॉपरली अपीयरेंस प्रॉपर देते हैं, प्रॉपरली अपीयर करते हैं, बिकॉज जजेस कन्विंस्ड हो जाते हैं कि ऐसा दिखने वाला आदमी इतना ज्यादा क्राइम कर ही नहीं सकता. So these are all researched. ऐसा नहीं है कि बना के बोला जा रहा है, मैंने भी नहीं किया है वो रिसर्च यूएसए से होके आ रहा है. These are from proper institutions and universities, and it has been conducted over for various sectors and segments in the society. तब जाके ये आया सामने. So if you talk about image management, it's for everybody. ये तो एक मिथ हुआ. सेकेंड मीथ है इमेज मैनेजमेंट. अगर प्रॉपरली इमेज अपना रखना चाहे दैट बिकम्स एन एक्सपेंसिव अफेयर. बिल्कुल भी नहीं. सपोज यू आर बाइंग अ टी शर्ट फॉर 200 rupees. You are spending that 200 rupees, right? So you can spend that 200 rupees for a proper t-shirt which will look good on you, which will make you more presentable. Image management is about that. इमेज मैनेजमेंट कभी ये नहीं बोलता है आप 200 रुपए का क्यों खरीद रहे हो, आप 2000 का खरीदो. नहीं, दिस इज नॉट द थिंग. It's a misconception. So what? Yes, it's a misconception. What image consultants do is they do a proper study of the client, starting from their economic status or their budget, whatever they have, their choice, their likes, their dislikes. An image consultant works keeping everything in mind. Okay. So that's really even like अगर हम लोग भी कभी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग भी किसी लोगों को कितने बार हम लोग भी जज कर देते हैं बने में इमेज मैनेजमेंट के बारे में पता हो या ना कि लाइक वो अच्छी का घर का लग रहा है, वो देखने में अच्छा लग रहा है, उसका पहनावा अच्छा है. करेक्ट. कई बार आपके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं मुझे. हमें जैसे लगता है इफ somebody is dressed properly, बहुत अच्छे से अपने को प्रेजेंट किया हुआ हो, शायद इतने पढ़े लिखे ना हो, बट हमें लगता है कि अच्छा वो तो काफी एजुकेटेड होंगे. Happens many times actually. और अगर बाद में पता भी चलता है हमें कि नो दैट पर्सन इज नॉट एजुकेटेड, दैट डज नॉट लेसन आवर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन. वो कभी नहीं होता है. हम फिर भी बात करते हैं, हम फिर भी आगे उनको जानने की कोशिश करते हैं. So man, the last thing I want to ask is that कि as an image management expert, क्या आप कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हो जो कि एक बिगिनर्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकता है अपने पर्सनल ब्रांडिंग को, अपने इमेज को अच्छा करने के लिए? ऑफ कोर्स, जैसे टिप्स. ऑफ कोर्स. नंबर 1, whenever you are talking, please maintain a nice tone of voice which should not have shrill, or you should not appear to be loud. Talk in a way which is soothing for the ear. Also, if I talk about proximity, आप अगर किसी जानने वाले से के सामने खड़े हो तो कितने दूरी पे खड़े होगे. अगर किसी को नहीं जानते हो तब एटलीस्ट 1.5 हाथ की दूरी पे खड़े होना. अगर कोई बिल्कुल भी जाना पहचानना नहीं हो तो एटलीस्ट 5 meters की दूरी पे खड़े होना. These are etiquettes which confirms the quality of the other person. Also, जैसे मैंने बोला है, it's not about how expensive you're wearing, but how well and how well coordinated attire you're wearing. Yeah. Your clothes. Your clothes color, are they going with your shoes color? क्योंकि आप देख ना, हम जब किसी आदमी को देखते हैं फट से हमारा नजर पैर की तरफ चला जाता है. Yeah. So your shoes should be absolutely proper. For men, they should be clean, polished. For women also, the shoes should be neat, clean, and that should go well with the attire. Also, your toes and feet should be neat and clean. If particularly in case of women, if they're wearing open shoes or sandals.
So one thing I wanna add in the first point, that is which you have told about the voice, that I also read somewhere that we always need to match the voice modulation of the person with whom we are talking. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आप पॉडकास्ट को इस पॉइंट तक देख रहे हो तो आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया और आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इमेंस नॉलेज भी मिली होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, रोशनी मैम उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगी। एंड उनके सारे सोशल मीडिया का लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाके उन्हें फॉलो या उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड होपफुली कि सॉफ्ट स्किल जैसे टॉपिक्स पे, इमेज मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट के थ्रू जरूर अवेयरनेस आएंगी। तो गाइस अगर आप यूट्यूब पे और भी अमेजिंग गेस्ट को देखना चाहते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहते हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।